Hello dear kids, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing your SST book. This is part 5 and the name of the book is Time Travelers Unraveling Histories Mysteries. So children, we are going to do chapter number 19 of the book, and the name of the chapter is Our Parliament and Constitution. So let's start with the chapter. Here you can see there's a picture given here. Look at the picture and identify the government building shown here. So you have to identify this building and also give some specific information about it. So this is your homework you have to do on your own. Now let's start with the chapter. Our Parliament. The Parliament of India is a principal law-making body of the country. So जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो लॉ मेकिंग बॉडी है, वो लॉज को बनाता है. इट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर नेशन. पूरे जो नेशन है, पूरी जो कंट्री है उसके लिए लॉ बनाता है. द पार्लियामेंट्स मेन फंक्शन इज टू मेक लॉ एंड रूल टू रन द सिस्टम इन द ट्रांसपेरेंट एंड पीसफुल. सो जो पार्लियामेंट है इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? लॉज को बनाना, रूल्स को बनाना और सिस्टम जो है ठीक से रन करे. उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पीसफुल वे में वर्क करे. दिस इज द फंक्शन ऑफ आवर पार्लियामेंट. नाउ लेट्स लर्न अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी कंट्री का सुप्रीम लॉ है, उसको ही फॉलो करना होता है. Some important acts related to the Constitution of India are discussed below. So, Constitution of India में कुछ important laws दिए गए हैं that are written here. Let's read them. Here, the first law is Right to Information Act, and it is RTI 2005. So, the first law that is given here is Right to Information. Information का मतलब होता है किसी भी तरीके की information हमें मिल पाना, किसी भी तरीके का संदेश हमें मिल पाना. So right to information has been recognized as a fundamental human right which upholds the inherent dignity of all the human beings. So जो भी human being है उन सबको ये अधिकार है कि उन्हें हर चीज की information मिले. This act allows the people to question the government on any issue. इस act की वजह से लोग गवर्नमेंट से किसी भी इशू पे क्वेश्चन कर सकते हैं. People can file an RTI query for any government department. So लोग जो है किसी भी तरीके का RTI query जो है फाइल कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से. When the department receives a query, it must respond within 30 days. So अगर किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी क्वेरी पूछी जा रही है तो उस डिपार्टमेंट को 30 डेज के अंदर उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है. In its reply, the department must name the file which record the information required. So अपने जो भी आप एक्सप्लेनेशन वो गवर्नमेंट दे रही है, वो डिपार्टमेंट दे रहा है, उसमें उस फाइल का नाम होना चाहिए जिसमें वो इंफॉर्मेशन दी गई है. This gives the applicant a chance to inspect the file, जिसकी वजह से वो एप्लीकेंट जो है फाइल्स को एग्जामिन कर सकता है. It allows the applicant to take photocopies of the notes made in the file. So जो भी उस फाइल में लिखा हुआ है उन सबकी वो फोटोकॉपी ले सकता है वो एप्लीकेंट. And if or she wishes to file a case against the government, तो अगर वो इंसान चाहता है कि उस गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस किया जाए तो वो उनकी फोटोकॉपी निकाल के और उन्हें आगे फॉरवर्ड कर सकता है. In this way, RTI makes the government transparent and efficient. और इस तरीके से जो RTI है वो गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाती है. Now the next law is Protection of Women and Domestic Violence Act 2000. So यहाँ पे वुमेन का प्रोटेक्शन की बात हो रही है और जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जिनके साथ मारपीट होती है घरों में, उसके लिए ये एक्ट बना है and it was passed in 2005. The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 is an act of the Parliament of India
enacted to protect women from domestic violence. So domestic violence से औरतों को बचाने के लिए ये एक्ट बना था. It was enacted by the Parliament of India in 2005. So 2005 में इंडियन पार्लियामेंट ने इस एक्ट को कंसिडर किया था and brought into force in the Indian government on 26 October 2006. So अब ये जो है एक्ट बन तो गया था, लेकिन इसको जो है पूरी तरह से फोर्स में आने में टाइम लगा. और कब ये स्टार्ट हुआ? 26 अक्टूबर 2006 से ये एक्ट स्टार्ट हो गया. The Act protects women from physical, verbal, mental, emotional and economical harm. So इस एक्ट के थ्रू women को physically harm जो पहुंचाया जाता था, verbally means बोल के harm पहुंचाया जाता था, mentally harm means mentally उन्हें परेशान किया जाता था, emotionally उन्हें परेशान किया जाता था, या फिर पैसे से इकोनॉमिकली परेशान किया जाता था. तो इन सब चीज़ों के खिलाफ women इसमें केस कर सकती हैं. It also covers harassment by way of unlawful dowry demands. So इसमें harassment भी आता है, जिसमें dowry demands भी आते हैं, means दहेज के लिए प्रताड़ित करना भी इसके अंदर आता है. On a woman or her relatives, किसी woman पे या फिर उसके रिश्तेदारों पे. The Act also provides for the women's right to live in her matrimonial or shared household. So इस एक्ट के अकॉर्डिंग women अपने मैट्रिमोनियल घर में भी रह सकती हैं और या फिर शेयर्ड हाउस होल्ड में भी रह सकती है. इट्स देयर चॉइस. नाउ द नेक्स्ट एक्ट इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन. राइट टू एजुकेशन मीन्स RTE 2009. सो 2009 में एक एक्ट पास हुआ था जो था फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन. सो राइट ऑफ चिल्ड्रन to free and compulsory education 2009 aims towards providing free and compulsory elementary education to children below the age group of 6 to 14 years. So 6 से लेके 14 years तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने इसमें दिया जाता है. This act provides free education for every child in every school. So हर बच्चे को हर स्कूल में फ्री एजुकेशन दिया जाएगा इसके अकॉर्डिंग, irrespective of their social background और physical ability. भले ही उनका सोशल बैकग्राउंड कैसा हो या उनकी फिजिकल एबिलिटी कैसी हो, बच्चे को फ्री एजुकेशन दी जाएगी. अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ऑल प्राइवेट स्कूल्स, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं, have to reserve 25% of the seats in each class for poor children. तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग 25% सीट जो है हर क्लास में होनी चाहिए पुअर चिल्ड्रन के लिए. द एक्ट ऑल्सो बैन्स डोनेशन एंड इंटरव्यू ऑफ स्टूडेंट्स और पेरेंट्स फॉर एडमिशन इन एनी स्कूल. सो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप डोनेशन जो है नहीं मांग सकते या इंटरव्यू नहीं कर सकते ऐसे बच्चों का या उनके पेरेंट्स का जो इन स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं. The RTE Act 2009 offers provision for students who drop out of school. So RTE जो क्या करता है, ऐसे बच्चों को प्रोविजन देता है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं. Here you can see the picture of free and compulsory education for children. Now the next act is 73rd Constitutional Amendment Act 1992. The 73rd Constitutional Amendment Act was introduced by the Indian National Government to improve local self-governance. So ये जो है एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था किस लिए? इंडियन नेशनल गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने के लिए अपने लोकल सेल्फ गवर्नेंस की. This act aimed to strengthen the पंचायती राज सिस्टम. So इस एक्ट का मेन मोटिव था कि पंचायती राज सिस्टम को और मजबूत किया जाए and increase people's participation in governance, और लोगों का पार्टिसिपेशन जो है बढ़ाया जाए गवर्नेंस में. 1/3 of the seats in panchayats are reserved for women. So ऐसी पंचायत में 1/3 सीट जो है लोग वुमेन के लिए रिजर्व की गई है. It provided for पंचायत to be elected at 3 levels. पंचायत को 3 levels पे इलेक्ट कर सकता है.
at the village, block and the district level. So तीनों लेवल पे इलेक्शन हो सकता है. At the first tier or village level, the panchayat is known as ग्राम पंचायत. So पहला लेवल जो विलेज लेवल है वहाँ पे ग्राम पंचायत बोला जाता है इसे. The members of the ग्राम पंचायत are elected by the people for their own village. So यहाँ जो members होते हैं ग्राम पंचायत के, ये जो है these are elected by the people. वहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा ही इलेक्ट किया जाता है. Several ग्राम पंचायत form the पंचायती समिति. बहुत सारे ग्राम पंचायत जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो पंचायत समिति बन जाते हैं. And it works at the block level. और ये block level पे वर्क करते हैं. Several पंचायत समितिस form the direct पंचायत, district पंचायत. So बहुत सारे जब पंचायत समिति हैं वो सारे मिलके क्या बन जाते हैं? डिस्ट्रिक्ट पंचायत या फिर जिला परिषद बन जाते हैं. इट वर्क्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वर्क करते हैं. नाउ लेट्स रीड अबाउट सम AI facts. With a vast amount of data generated in the legal profession, AI has a potential to streamline process and provide more efficient and accurate prediction of case outcome. According to the new education policy, from the age of 3 years, children will be part of early childhood care and education. Now let's quickly revise what we have learned here. The Parliament of India is the principal law-making body of the country. Right to Information Act means RTI 2005 allows people to question the government on any issue. Protection of Women for Domestic Violence Act 2005 protect women in India for domestic violence. And the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 provides free and compulsory education to all the children between the age of 6 to 14 years. And 73rd Constitution Amendment Act 1992 strengthen the Panchayati Raj system. Now let's quickly answer these questions. What happens when you file a query under the RTI? So RTI के अंदर अगर आपने कोई भी query file की है तो क्या होता है? So if we file any of these queries, the concerned body with which we are doing the query, that body has to answer the query within the 30 days with appropriate file number where the answer is written there. And the person who has filed the query, that person can file a case, and for that he can or she can take the photocopy of that. How does an RTI become useful? So RTI कैसे useful है? This you have to find out right here. List a few important provisions of RTE. So the important provisions of RTE is, first, RTE means right to education, and it is developed for the children. For the children under the age from 6 to 14 are given free education, and they do not need any type of donation or any other things, any type of interview. And also write down a few of the points on your own. Highlight the importance of the Domestic Violence Act. So Domestic Violence Act की क्या important points are that you have to highlight here. What do you know about 73rd Constitutional Amendment Act 1992? So children, you have to do this question on your own, and for doing so you have to read the chapter again and complete the given exercises. Children, I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay lated.